Exercise 14.0 question number 6 रो 11th bit. तो 11th bit अच्छी limit x tends to pi by 4 sin 1 minus tan x by 1 plus tan x divided by अच्छी pi by 4 minus x. तो ये question गोटे important question. ठीक अच्छी. तो this equal to limit x tends to pi by 4 sin तो 1 प्लस रे हमें यूज करिबा tan 45 डिग्री मींस tan pi by 4 minus tan x divided by ये 1 तक 1 रखिबो प्लस रहिला तो tan x इक्वल हमर 1 into tan x by परिबो तमेटी 1 प्लस रे tan pi by 4 यूज करिबा into tan x रख देबा ठीक अछि तो tan pi by 4 1 into tan x हमर tan x जेबो तो tan x तक में 1 into tan x करिबो 1 तक tan pi by 4 करिबो into tan x divided by pi by 4 minus x तो this equal to limit x tends to pi by 4 sin तो tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b फॉर्म रे अछि तो ये हमरो tan a minus b रो फार्मूला अप्लाई हे जेबो tan a minus b that is pi by 4 minus x divide by pi by 4 minus x then हमें सब्स्टिट्यूशन कर देबा let pi by 4 minus x equal to y when x tends to pi by 4 तो this implies y हमरो tends to 0 हे जेबो ठीक अछि तो this equal to limit y tends to 0 हे गला sin tan y ते हमरो y अछि divided by y हे गला तो equals to limit y tends to 0 sin tan y divide by tan y तमे tan y मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दबा tan y मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दबा ठीक अछि तो tan y by y देन हमें कौन करियो ना लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन कर दबा लिमिट y टेंड्स टू 0 sin tan y डिवाइड by tan y तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन लिमिट y टेंड्स टू 0 tan y by y ठीक अछि when y tends to 0 यदि y हमरो tends to 0 अछि तो this implies tan y also tends to 0 तले this equal to limit तो एटी हमें tan y tends to 0 करि परिबा sin tan y divided by tan y into तो यूजिंग फार्मूला तो दूसरा लिमिट 1 हे जेबो तो हमरो sin x by x हमरो टेंड्स टू 0 थिले 1 हे जे तमेटी फार्मूला अप्लाई करिबो tan y सेम अछि टेंड्स टू 0 अछि तमे फार्मूला अप्लाई कले ये 1 हे जेबो इनटू हमरो 1 अछि तो आंसर मिलला 1 ठीक अछि तो हमको 11th बिट आंसर मिलला 1 देन 12th बिट तो 12th बिट अछि लिमिट x tends to pi by 2 log 1 minus sin cube x divided by अच्छे cos square x ठीक है तो this equal to limit x tends to pi by 2 log तमे 1 टकु 1 रो क्यूब कर देबा minus sin x रो क्यूब कर देबा divided by cos square x equal to हमारा फार्मूला 1 minus sin square x ठीक अछि तमे यूज करिबा 1 minus sin square x तो this equal to limit x tends to pi by 2 log तो here apply करिबा a cube minus b cube रो फार्मूला तो a cube minus b cube equal to 1 minus sin x into 1 plus ab यानी 1 into sin x तो ये sin x है जीवो प्लस sin x रो स्क्वायर sin square x तो मैं अप्लाई करली फार्मूला a cube minus b cube equal to a minus b whole into a square plus ab plus b square divided by 1 minus sin square x तो मैं यूज करिबा a minus b into a plus b a square minus b square फॉर्म रे अछि 1 टका में 1 रो स्क्वायर भी करि परिबे ना तो 1 minus sin x into 1 plus sin x कर देबा तो मैं अप्लाई करली a square minus b square equal to a minus b into a plus b ठीक अछि now 1 minus sin x cancel हो गला तो this equal to limit x tends to pi by 2 log
1 plus sin x plus sin square x divided by 1 plus sin x अच्छे। तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें डीएसएम कर दबा। तो x इक्वल टू 90 पुट करिबा। तो 1 प्लस sin 90 प्लस sin 90 रा स्क्वायर माने sin स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 90। ठीक है। तो दिस इक्वल टू log 1 प्लस sin 90 वैल्यू 1। तो sin 91 1 रा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो दिस इक्वल टू मिलला log 3/2। ठीक है। तो हमको 12th बीट आंसर मिलला log 3/2। Number 6 रो 13th बीट अच्छे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर x into e टू द पावर 1 by x minus 1 अच्छे। तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर x into e टू द पावर 1 by x minus 1। तो e टू द पावर 1 by x अच्छे। तो हमें 1 by x तो ये हमें x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है। तो हमें x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो e टू द पावर x by x कर दबा into e टू द पावर 1 by x minus 1 by 1 by x कर दबा। ठीक है। देन हमें कौन करिबा ना लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन करिबा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर x by x कर दबा इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर 1 by x minus 1 by 1 by x कर दबा। ठीक है। तो हमारा सेकेंड फंक्शन पे हमें सब्स्टिट्यूशन कर दबा। लेट 1 by x इक्वल टू y। लेट 1 by x इक्वल टू y व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दिस इंप्लाइज y हमारा टेंड्स टू 0 हो जीवो। तो 1 by इंफिनिटी हमारा टेंड्स टू 0। तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो e टू द पावर x डिवाइड बाय x रहला इनटू लिमिट y टेंड्स टू 0 हो गला e टू द पावर y minus 1 डिवाइड बाय हमारा y। तो क्लियर देखो ये फार्मूला फॉर्म का आसीगला। देन हमें फार्मूला अप्लाई करिबा। तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर x by x इनटू तो दिस लिमिट ln a और log a। तो दिस इक्वल टू मिलला ln a कांस्टेंट इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर x डिवाइड बाय x। बस ये पार्ट रो लिमिट हमें केमती सॉल्व करे सेटा हमें गोटे इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक अछि। तो हमें एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x रो हमें एक्सपोनेंशियल सीरीज यूज करिबा। ln a इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो e टू द पावर x रो फार्मूला 1 प्लस x by 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल प्लस एमती कंटिन्यू करथिबो इनफिनिटली। ठीक अछि। डिवाइडेड बाय x। तो दिस इक्वल टू ln a into लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देन हमें x टा ऑल टर्म्स रे डिवाइड कर दबा। तो 1 by x है जीवो। सेकंड टर्म रे डिवाइड ले x कैंसिल है जीवो 1 by 1 फैक्टोरियल है जीवो। थर्ड टर्म रे में डिवाइड करले x by 2 फैक्टोरियल है जीवो प्लस एटा कंटिन्यू करथिबो इनफिनिटली। ठीक अछि। तो दिस इक्वल टू ln a into limit of 1 by x। 1 by x लिमिट हमारा 0 x हमारा टेंड्स टू इंफिनिटी अछि। तो 1 by x रो लिमिट 0 है जीवो प्लस 1 by 1 फैक्टोरियल बट एटी इंफिनिटी यूज करला हमने ये एक्सप्रेशन हमारा इंफिनिटी है जीवो। सब एक्सप्रेशन हमारा इंफिनिटी है जीवो। ठीक अछि। तो ये इंफिनिटी प्लस 1 by 1 फैक्टोरियल। तो ये भी इंफिनिटी इनटू ln a। तो हमारा सॉल्व हो गला पर आंसर आसीबो इंफिनिटी। तो हमको 30th बीट आंसर मिलला इंफिनिटी। नंबर 6 रा 14th बीट। तो 14th बीट अच्छे लिमिट x टेंड्स टू 0 x into e टू द पावर एक्सप्रेशन e रो पावर अच्छे -1 डिवाइड बाय रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 -1 अच्छे। ठीक अच्छे। तो हमें फर्स्ट स्टेप रे कोन करिबा x टे डिवाइड कर दबा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 -1 डिवाइड बाय x अच्छे और -1 अच्छे होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 -1
डिवाइड बाय आम एक्स करदे ठीक अच्छे मुझे एक्स नेगेटिव डिवाइड कली ये सिंप्लिफिकेशन हो गला अगेन तुम एक्स ए पोजिशन को आसो ठीक अच्छे देन आम कौन करवा ना ये एक्सप्रेशन टाक आम नहीं जावा वाई एक्सप्रेशन टाक आम नवा वाई तो लेट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स इक्वल आम वाई नहीं जावा तो नेक्स्ट स्टेप रे हमर लिमिट x टेंड्स टू 0 अछि हमें बोथ साइड्स लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं जेबा तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y ठीक अछि तो मु नहीं गेले लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ LHS और RHS नहीं गेले देन तो यार लिमिट हमें केमते सॉल्व करबा स्क्वायर रूट अछि माने हमें यूज करबा रैशनलाइजेशन मेथड ठीक अछि तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय x अच्छी तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देवा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y रहेगा ठीक अच्छे तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस b a प्लस b मल्टीप्लाई गले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो दिस रो स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 और 1 रो स्क्वायर तो 1 इज डिवाइड बाय x इनटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y ठीक अच्छे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाइबो तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें x कॉमन नहीं जाइबो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो x कॉमन नेले तो ये x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x इनटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ y ठीक अच्छे तो हमारा x कैंसिल हो गला देन हमें डीएसएम करिए डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट कर देबा तो 0 पुट कले 0 प्लस 0 डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ y रहला तो दिस इंप्लाइज ये 0 बाय हमारा 2 अच्छे तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ y हो गला तो ये तो 0 हो गला मीन्स हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ y इक्वल टू मिलला 0 तो यार मीन्स करना व्हेन x टेंड्स टू 0 तो दिस इंप्लाइज y आल्सो हमारा टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 y भी हमारा टेंड्स टू 0 अछि तो यार मीन्स हला x टेंड्स टू 0 y आल्सो टेंड्स टू 0 देन हमें कौन करना है टू स्टार्ट करिबा तो इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू 0 है जीवो तो ये एक्सप्रेशन तो हमें y नहीं चंदी तो e टू द पावर y है गला -1 अच्छी -1 रहला डिवाइड बाय y तो हमारा लिमिट रे फार्मूला अच्छी तो हम फार्मूला थिला लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 बाय x थिला 1 हबो तो इट यूजिंग फार्मूला हमें 1 करिबा तो हमको 14th वेट आंसर मिल गला 1 नंबर 6 रा 15th वेट अच्छे लिमिट x टेंड्स टू 0 b tan x into e to the power sin ax by tan bx minus a by b अच्छे डिवाइड बाय b sin ax माइनस अच्छे a into tan bx ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 b tan x into e to the power sin ax डिवाइड बाय tan bx अच्छे माइनस a बाय b अच्छे ठीक अच्छे डिवाइड बाय तो हमें डिनोमिनेटर कॉमन नहीं जीवा sin हमें b इंटू tan bx कॉमन नहीं जीवा तो हमें b इंटू tan bx कॉमन नहीं जीवा ठीक अच्छे तो कॉमन नेले हियर हमारा sin ax बाय tan bx है जीवा माइनस तो हमें tan bx कॉमन नहीं चाहिए तो a बाय हमारा b है जीवा ठीक अच्छे तो b कैंसिल हो गला तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 तो tan x by tan bx अच्छे तो हमें लिमिट ऑफ tan x by tan bx कर देबा इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारा सेकंड फंक्शन अच्छे a टू द पावर sin ax by tan bx
माइनस ए बाई बी अच्छी और डिवाइड बाई साइन ए एक्स डिवाइड बाई टेन बी एक्स माइनस ए बाई बी अच्छी ठीक अच्छे। तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन करदेव इंटू लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन करदेव। तो फर्स्ट फंक्शन लिमिट आम सॉल्व करवा देन आम सेकेंड फंक्शन सॉल्व करवा। तो टेन एक्स अच्छी तो आम मल्टीप्लाई डिवाइड करदेव एक्स ठीक अच्छे देन आम फॉर्मूला यूज करिपरिबा। तो टेन बी एक्स अच्छी तो आम मल्टीप्लाई डिवाइड करदेव बी एक्स ठीक अच्छे आम मल्टीप्लाई डिवाइड करदेव बी एक्स इंटू रहा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो e टू दी पावर एक्सप्रेशन टाक आम लेट नहीं जीवा y ठीक अच्छे मु y नहीं जाइए दिस इक्वल टू y डिवाइड बाय y। तो आमर सेकेंड फंक्शन अच्छे लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर y बाय y अच्छे ठीक अच्छे। तो आमर x x कैंसिल हो गला तो दिस इक्वल टू 1 बाय b तो कांस्टेंट तो 1 बाय b इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x डिवाइड बाय tan bx by bx है इंटू ये सेकेंड पार्ट भी सेमती था आगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करिया देन हमें सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करिया ठीक अच्छे। तो e टू दी पावर y by y तो दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ न्यूमरेटर लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर कर देबा। तो 1 by b लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x कर देबा डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 tan bx by bx कर देबा। तो इंटू रहा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर y by y ठीक अच्छे आम सेकेंड पार्ट सॉल्व है आम सॉल्व करवा। तो व्हेन x टेंड्स टू 0 तो दिस इम्प्लाइज bx आल्सो टेंड्स टू 0 देन आम यूज करिपरिबा एटी फॉर्मूला भी यूज करिपरिबा डिनोमिनेटर भी फॉर्मूला यूज करिपरिबा। तो दिस इक्वल टू 1 by b यूजिंग फॉर्मूला आम न्यूमरेटर हो गला 1 और यूजिंग फॉर्मूला डिनोमिनेटर भी हमारा 1 हो गला ठीक अच्छे इंटू अच्छे लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर y डिवाइड बाय y अच्छे। तो दिस इक्वल टू मिलला 1 by b इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर y बाय y ठीक अच्छे। तो हम प्रॉब्लम एबे हाफ सॉल्व है छी देन हमें y तो हमें y इक्वल टू नहीं ले तो y इक्वल टू हमारा sin साइन ax by tan bx साइन ax by tan bx माइनस a by b को हमें y नहीं चाहिए ठीक अच्छे। तो हमको इटा अज्यूम करे पड़े जाम दिस इक्वल टू y। तो हमारा लिमिट अच्छे x टेंड्स टू 0 तो हमें बोथ साइड लिमिट नहीं जीवा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax by tan bx माइनस a by b equals to limit y tends to x tends to 0 x tends to 0 of y ठीक अच्छे। तो दिस implies limit x tends to 0 sin ax by ax into ax कर दो ax मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और हियर अच्छे tan bx तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दबा bx ठीक अच्छे और माइनस a by b अच्छे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ y अच्छे। तो हमारा x x कैंसिल हो जाइबो a by b कांस्टेंट तो दिस इंप्लाइज a by b तो लिमिट ऑफ न्यूमरेटर x अप्रोचेस टू 0 यदि हमारा x हमारा टेंड्स टू 0 अच्छे ax b टेंड्स टू 0 हो जाइबो एंड bx also tends to 0 हो जाइबो। तो यूजिंग फार्मूला दूसरा लिमिट हमको 1 मिल गला यूजिंग फार्मूला दूसरा लिमिट 1 मिल गला माइनस a by b इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ y ठीक अच्छे। तो ये हमारा b अच्छे तो a by b तो कैंसिल हो गले तो हमको मिलला लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ y इक्वल टू 0। तो यार मीन्स करना व्हेन x टेंड्स टू 0 दिस इंप्लाइज y आल्सो हमारा टेंड्स टू 0। तो हमारा लिमिट सॉल्यूशन हाफ हेतिला तो देन हमें इटू स्टार्ट करिबा। तो दिस इक्वल टू 1 by b लिमिट x हमारा टेंड्स टू 0 मीन्स y आल्सो टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू 0 कर देबा e टू दी पावर y by y कर देबा ठीक अच्छे। देन हमें कौन करिबा ना एक्सपोनेंशियल सीरीज रा फार्मूला यूज करिबा। तो 1 by b रहला इनटू लिमिट y टेंड्स टू 0 e टू दी पावर y 1 प्लस y by 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल अच्छे
y स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एमती डॉट 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 कंटिन्यू करते इनफिनिटली और डिवाइड बाई y अच्छे ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू 1 बाई b इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 देन आम y डिवाइड करदेबा तो y डिवाइड कले आमर 1 बाई y हे जीवो प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल हे जीवो आमर एटा प्लस y बाई 2 फैक्टोरियल हे जीवो प्लस एमती कंटिन्यू करथिबो ठीक अच्छे देन आम कौन करबा ना डीएसएम करदो तो y आमर 0 अच्छी तमें 0 पुट कले 1 बाई 0 तो ये इनफिनिटी हो प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ये 0 प्लस आउ सब तुम 0 थी ठीक अच्छे तो इनफिनिटी प्लस फाइनाइट नंबर अच्छे तो इनफिनिटी हो मल्टीप्लाई भी हमको आंसर मिल जाए इनफिनिटी तो हमको 15th बीट आंसर मिलला इनफिनिटी। Number 7 अच्छी examine the existence of the following limit बस हमको ये existence of the limit चेक करिवार अच्छी तो फर्स्ट बिट देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x बेस है तो ये हमको प्लस देखिए मैंने हमें ओनली RHL ही सॉल्व करिवा ठीक है हमें ओनली RHL सॉल्व करिवा तो टेंड्स टू 0 प्लस देखिए तो हमें लेट नहीं जीवा लेट x इक्वल टू 0 प्लस h व्हेन x टेंड्स टू 0 तो दिस implies h हमारा टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 log तो x प्लस में 0 प्लस h यूज कर देबा तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 log बेस a तो 0 प्लस h इक्वल हमारा h हो गला देन हमें तो 0 पुट करिबा log 0 बेस ए तो हमारा 0 प्लस मैंने 0 रो राइट साइड तो बिटवीन 0 टू 1 हमारा लॉगरिथम वैल्यू ऑलवेज कोन हबो ना नेगेटिव आसीबो तो log 0 अछि माने इनफिनिटी आसीबो बट एटा माइनस आसीबो तो रीजन ला हमारा 0 टा बिटवीन 0 प्लस टा कोन बिटवीन 0 टू 1 अछि तो 0 टू 1 रे लॉगरिथम वैल्यू हमारा नेगेटिव आसे तो हमको फर्स्ट बिट आंसर मिल गला माइनस इनफिनिटी हमको ओनली आरएचएल सॉल्व करे पड़ला बट सेकंड बिट देछि हमको लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan x तो ये हमको पाई बाई 2 देछि तो हमको ये बोथ LHL एंड RHL सॉल्व करे पड़िबो तो हमें फर्स्ट LHL सॉल्व करिबा तो LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस tan x कर देबा ठीक अछि देन हमें सब्स्टिट्यूशन करिबा x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2 तो ये नियर टू पाई बाई 2 ये पाई बाई 2 तर डिफरेंस ना नियर टू 0 हो जाएगा मींस हमको h मिलला टेंड्स टू 0 तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 2 माइनस h तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 90 माइनस थीटा तो हमारा cot h हो जाएगा तो दिस इक्वल टू 0 पुट कले cot 0 तो हमारा डेफिनेटली कौन हो tan 0 0 cot 0 टा हमारा इनफिनिटी है जीवो तो हमको LHL मिल गला इनफिनिटी देन RHL तो RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस कर देबा tan x देन सब्स्टिट्यूशन करिबा लेट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2 तो दिस implies h हमारा टेंड्स टू 0 हो जाइबो ठीक अछि तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan तो हम x प्लस रे पाई बाई 2 प्लस h यूज करिबा तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 90 प्लस थीटा रो फॉर्मूला माइनस cot थीटा माइनस तो ये cot h है जीवो देन हमें 0 पुट करिबा माइनस cot 0 तो इक्वल्स टू मिलला माइनस इनफिनिटी तो LHL मिलला इनफिनिटी RHL मिलला माइनस इनफिनिटी देयरफॉर LHL नॉट इक्वल टू RHL LHL not equal to RHL तो this implies limit x tends to pi by 2 tan x does not exist तो हमको सेकेंड बिट आंसर मिला डज नॉट एग्जिस्ट देन थर्ड बिट देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x देखिए तो ये हमको 0 देखिए तो हमें LHL RHL बोथ सॉल्व करेगा
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस तो ये हमारा LHL तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कोसेक x तो हमें सब्स्टिट्यूशन कर देबा लेट x इक्वल टू 0 माइनस h व्हेन x टेंड्स टू 0 तो दिस implies h also टेंड्स टू 0 हो जाइबो तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक 0 minus h तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक माइनस h तो कोसेक माइनस h इक्वल टू माइनस कोसेक h तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कोसेक h ठीक अच्छे देन हम h इक्वल टू 0 पुट कर देबा तो कोसेक माइनस तो रहला कोसेक 0 sin 0 हमरो 0 कोसेक 0 हमरो इनफिनिटी दियला माइनस इनफिनिटी देन हमें RHL सॉल्व करिबा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कोसेक x देन हमें सब्स्टिट्यूशन करिबा लेट x इक्वल टू 0 प्लस h व्हेन x टेंड्स टू 0 तो दिस implies h हमरो टेंड्स टू 0 हो जेबो ठीक अछि तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक 0 प्लस h तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कोसेक h हे गला 0 पुट कला माने कोसेक 0 कोसेक 0 ला हमर इनफिनिटी तो क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू RHL तो दिस implies लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x does not exist तो हमको थर्ड बीट आंसर भी मिला लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट नंबर 7 रो फोर्थ बीट अच्छी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर 1 बाय x तो ये 0 माइनस देछि तो हमें ओनली LHL सॉल्व करिवा ठीक अछि तो लेट नै जिबा लेट x इक्वल टू 0 minus h when x tends to 0 so this implies h also tends to 0 so this equal to limit h tends to 0 is e to the power 1 by तो x हमारा 0 minus h so this equal to limit h tends to 0 तो e to the power minus 1 by h है गला तो this equal to limit h tends to 0 1 by e to the power 1 by h है जीवा तो ठीक से मन करो h हमरो टेंड्स टू 0 तो 1 by h डेफिनेटली टेंड्स टू इनफिनिटी है जीवो तो e टू द पावर 1 by h हमरो टेंड्स टू इनफिनिटी है जीवो बट इट 1 by e टू द पावर 1 by h अछि तो ये हमरो टेंड्स टू इनफिनिटी तो 1 by इनफिनिटी हमरो डेफिनेटली अप्रोचेस टू 0 तो ये हमरो 0 मिलला तो हमको फोर्थ बीट आंसर मिलला 0 ठीक अछि देन फिफ्थ बीट तो फिफ्थ बीट अछि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 by x ये तो सेम टाइप रो क्वेश्चन अछि तो हमें सब्स्टिट्यूशन कर देबा x इक्वल टू 0 प्लस h व्हेन x टेंड्स टू 0 तो दिस implies h हमरो टेंड्स टू 0 तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 by 0 प्लस h ठीक अछि तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 by h हे गला तो e टू द पावर 1 by h रो लिमिट तो इनफिनिटी हो तो हमें 0 पुट करला माने हमको रिजल्ट डेफिनेटली इनफिनिटी मिलियो बेटी सॉल्व कर दे छी तो e टू द पावर 1 by h रो लिमिट हमरो टेंड्स टू इनफिनिटी हो व्हेन h टेंड्स टू 0 थिबो ठीक अछि तो हमको फिफ्थ बीट आंसर मिल गला इनफिनिटी देन सिक्स्थ बीट तो सिक्स्थ बीट अछि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by e to the power 1 by x minus 1 तो ये हमको 0 देछि माने हमें LHL RHL बोथ सॉल्व करिवा ठीक अछि तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 minus 1 by e to the power 1 by x minus 1 तो हमें सब्स्टिट्यूशन कर देबा x इक्वल टू 0 minus h when x tends to 0 so this implies h also tends to 0 so this equal to limit h tends to 0 1 by e to the power 1 by 0 minus h minus 1 ठीक है तो this equal to
लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by e to the power minus 1 by h minus 1 is 0. So this is equal to limit h tends to 0 1 by e to the power 1 by h minus 1 रहला. तो h हमर टेंड्स टू 0 तो यार लिमिट हमर इन्फिनिटी is 0. तो 1 by e to the power 1 by h हमर टेंड्स टू 0 is 0. तो दिस इक्वल टू 1 by तो दिस लिमिट हमको 0 मिलला minus 1 e to the power 1 by h tends to our infinity. When h tends to 0, तो e to the power 1 by h हमारा tends to infinity. तो this one infinity, तो 1 by infinity हमारा 0 है 0 minus 1 है गला. तो this equal to मिलला minus 1. तो हमको LHL मिल गला minus 1. Then हमें RHL solve करीबा. RHL limit x tends to 0 plus 1 by e to the power 1 by x plus minus 1 हमारा minus 1 अच्छे minus 1. Then हमें substitution करीबा x equal to 0 plus h. When x tends to 0, so this implies h tends to 0. So this equal to limit h tends to 0 1 by e to the power 1 by 0 plus h minus 1 minus 1 अच्छी. तो this equal to limit h tends to 0 1 by e to the power 1 by h गला minus 1. तो this equal to तो this limit तो हमारा infinity तो हमारा 1 by infinity minus 1 is 0. तो 1 by infinity हमारा tends to 0. तो हमको LHL not equal to RHL मिलना. तो this implies limit x tends to 0 1 by e to the power 1 by x minus 1 does not exist. तो हमको 6th bit आंसर मिलला limit of the function does not exist. Number 8 अच्छी find the value of a if first bit अच्छी limit x tends to alpha tan a into x minus alpha divided by x minus alpha equal to 1 by 2. तो हमको limit of the function already given देछे बस हमको value of a माने a रा value हमको find करिवार अछि. तो हमें substitution करिवा let x minus alpha equals to y. When x tends to alpha तो this implies y tends to 0 is 0. ठीक अछि. तो this implies limit y tends to 0 ही गला tan a into x minus alpha हमारा y अच्छे divided by y equals to 1 by 2. तो this implies limit y tends to 0 tan a y अच्छे तो हमें a मल्टीप्लाई कर दवा a डिवाइड कर दवा. ठीक है हमें a मल्टीप्लाई डिवाइड कर दवा equals to 1 by 2. a कांस्टेंट अच्छे तो this implies a into तो हमारा a into limit y tends to 0 tan ay divided by ay equals to 1 by 2. ठीक अच्छे तो हमारा a अच्छे. तो नेक्स्ट स्टेप रे y tends to 0 यदि y tends to 0 अच्छी this implies ay also tends to 0. तो यूजिंग फॉर्मूला this equal to हमारा 1 है गला. तो implies that a into 1 equals to 1 by 2. तो this implies a equals to 1 by 2. तो हमारा लिमिट रे फॉर्मूला अच्छी limit x tends to 0 tan x divided by x equal to 1. तो हमें फॉर्मूला यूज करिवा तो ay तो y 0 माने डेफिनेटली ay also tends to 0 है गला. तो यूजिंग फॉर्मूला 1 है गला तो a into 1 equal to half. तो a equal हमको मिलला half. तो हमको फर्स्ट बिट रा a रा वैल्यू मिलला 1 by 2. देन सेकेंड बिट अच्छे लिमिट x tends to 0 tan ax डिवाइड बाय अच्छी sin 2x equal to 1. बस हमको a रा वैल्यू फाइंड करिवार अच्छे. तो this implies limit x tends to 0 tan ax अच्छी तो हमें ax मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दवा. ठीक है ax मल्टीप्लाई डिवाइड कर दवा. देन डिवाइड बाय sin 2x अच्छी तो हमें 2x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दवा. तो हमें 2x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दवा. ठीक है तो
तो x x कैंसिल हो जीवो a by 2 constant तो this implies a by 2 into limit x tends to 0 tan ax divided by ax अच्छे और whole divided by sin 2x by 2x अच्छे equals to 1 तो this implies a by 2 into limit of numerator limit x tends to 0 tan ax divided by ax whole divided by limit x tends to 0 sin 2x divided by 2x equals to 1 when x tends to 0 so this implies ax also tends to 0 hobo and 2x also tends to 0 तो using formula तो हमको न्यूमरेटर वैल्यू मिल रहा 1 तो ये 1 है जीवो और डिनोमिनेटर भी वैल्यू 1 मिल रहा तो यूजिंग फार्मूला ये भी 1 है जीवो ये भी 1 है जीवो इक्वल्स टू हमारा 1 अच्छे तो दिस इंप्लाइज a by 2 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 2 तो हमको सेकंड बिट रे a रा वैल्यू मिल रहा 2 ठीक अच्छे देन थर्ड बिट तो थर्ड बिट अच्छे लिमिट x tends to 0 e to the power ax minus e to the power x divided by x equal to 2 अच्छे ठीक अच्छे तो हमको बस a रा वैल्यू फाइंड करिवर अच्छे तो दिस implies limit x tends to 0 e to the power ax minus 1 हमें plus 1 कर दा 1 ऐड करिवा 1 माइनस कर दवा minus e to the power x divided by x equal to 2 तो this implies limit x tends to 0 e to the power ax minus 1 तो here हमें माइनस कॉमन नहीं जीवा e to the power x minus 1 नहीं जीवा divided by x equal to 2 तो this implies limit x tends to 0 हमें x डिवाइड कर दो बोथ रे तो e to the power ax minus 1 by x minus e to the power x minus 1 by x equal to 2 then हमें लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लिमिट ऑफ सेकंड टर्म कर दबा तो लिमिट x tends to 0 e to the power ax minus 1 divided by x minus limit x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x equal to 2 अच्छे तो this implies x approaches to 0 तो हमारा ax also tends to 0 है जीवो e to the power ax minus 1 divided by x अच्छे तो हमें a multiply divide कर दो a multiply divide कर दो ठीक अच्छे तो यूजिंग फार्मूला सेकेंड टर्म हमारा 1 है गला तो इक्वल्स टू 2 तो दिस implies a constant ax tends to 0 अच्छे तो यूजिंग फार्मूला दिस इक्वल टू हमारा 1 है जीवो minus 1 equals to 2 तो दिस implies a 1 शिफ्ट कर दो 2 plus 1 तो दिस implies a इक्वल टू हमको मिल रहा 3 तो हमको थर्ड बिट रे a रा वैल्यू मिल रहा 3 नंबर 8 रा फोर्थ बिट अच्छी लिमिट x टेंड्स टू 1 5 to the power x minus 5 डिवाइड बाय x minus 1 into log a base a इक्वल्स हमको 5 गिवन दे छे बस हमको a रा वैल्यू फाइंड करेवर छे तो दिस implies तो हियर 1 by log a base a कांस्टेंट अच्छी तो implies that 1 by log a base a into his limit x tends to 1 5 to the power x minus 5 डिवाइड बाय x minus 1 इक्वल टू 5 ठीक अच्छे तो दिस implies 1 by log a base a into limit x tends to 1 तो हमें 5 कॉमन नहीं जीवा तो 5 to the power x minus 1 है जीवो डिवाइड बाय x minus 1 इक्वल टू 5 देन 5 भी कांस्टेंट अच्छे तो implies that 5 by log a base a into x tends to 1 5 to the power x minus 1 divided by x minus 1 equals to 5 then हमें कौन करिए ना सब्स्टिट्यूशन कर देवा x minus 1 equal to y let x minus 1 equal to y when x tends to 1 तो this implies y हमारा tends to 0 ही जीवो तो this implies 5 by log a base a into
तो लिमिट y टेंड्स टू 0 हो गला 5 टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड बाय तो दिस वन मोर x माइनस 1 y इक्वल्स टू 5 तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड बाय log a base e into the using formula तो this equal to log 5 base e है जीवो equals to 5 ठीक है तो ये 5 हमारा कैंसिल है जीवो तो implies that log 5 base e equals to मिडला log a base e तो मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड रे तो देन हमें कंपेयर करिबा तो हमको a equals to मिडला 5 तो फोर्थ बिट रे a रे वैल्यू हमको 5 मिलला then fifth bit the fifth bit अच्छी limit x tends to 2 log 2x minus 3 base e डिवाइड बाय a into x minus 2 इक्वल हमको 1 गिवन देछि बस हमको a रा वैल्यू फाइंड करिवार अछि ठीक अछि तो हमरो a कांस्टेंट अछि तो 1 by a into limit x tends to 2 log 2x minus 3 base e डिवाइड बाय x minus 2 कर देबा ठीक अछि इक्वल्स टू 1 अछि तो हियर हमें सब्स्टिट्यूशन करिबा x minus 2 इक्वल टू y तो x इक्वल टू y plus 2 है जीवो when x tends to 2 तो this implies y हमारा tends to 0 है गला 2 ये 2 अच्छी तो tends to 0 तो this implies 1 by a into limit y tends to 0 कर देबा log तो बेस तो e अच्छी 2 into x इक्वल टू y plus 2 minus 3 है गला डिवाइडेड बाय x minus 2 इक्वल टू y और इक्वल्स टू हमरा 1 दे छी ठीक अछि तो दिस इंप्लाइज 1 by a लिमिट y टेंड्स टू 0 log बेस e अछि 2y plus 4 minus 3 तो हमको मिलला 1 plus 2y ठीक अछि डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 1 तो ये 4 minus 3 1 है जीवो और प्लस 2y रहला तो दिस implies 1 by a into limit तो y tends to 0 अच्छी माने 2y also tends to 0 करी परिबा में तो log base e 1 plus 2y डिवाइड बाय y अच्छी तमे 2 मल्टीप्लाई करिबा 2 डिवाइड कर दबा ठीक अछि दिस इक्वल टू 1 तो 2 कांस्टेंट अच्छी तो 2 by a into limit 2y tends to 0 log बेस e अच्छी 1 plus 2y डिवाइड बाय 2y तो हमारा फॉर्मूला फॉर्म को आसी गला ठीक अछि 2y सेम अच्छी टेंड्स टू 0 अच्छी तो यूजिंग फॉर्मूला 2 by a into 1 है जीवो यार फॉर्मूला अप्लाई करले 1 है जीवो इक्वल्स टू 1 तो दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू हमको 2 मिलला ठीक अछि तो हमको फिफ्थ बिट रे आंसर मिलला a रा वैल्यू